So good morning, everyone. Good morning. I hope all of you have solved these problems. Tell me, right? At least attempted. You know. Okay. So we have discussed till question number 40, right, everyone? We have discussed till question number 40. Okay. Yes. So we will discuss after 40 to 60. We need to discuss. Okay. Right. So till 40, anyone have any other doubts till 40? Before moving forward, do we have any other doubts till 40? I'll send the solution also, so don't worry, but you should understand, right? Because if you just see the solution, you will just see the step, but you will forget, how to solve, what is the approach to be taken, and all those things. Okay, so I guess there's no doubt till question of 40. Right. Now question of 41, everyone, just look at question of 41. A single slit drawn half a diffraction. So it's drawn half a diffraction means normal diffraction. Yes or no? Right? It's just your normal diffraction. Okay. Is found with a white light. Okay. For what wavelength of light the third secondary maxima in the diffraction pattern coincide with the second secondary maxima in the pattern of red wavelength of this? So don't you think that this is similar problem? Tell me yes or no. This is a similar problem. N1 lambda 1 is equal to N2 lambda 2. तो secondary maximum मतलब क्या है? What? Secondary maxima मतलब क्या है? See here, right? Secondary maxima normally means जैसे first एक primary बन गया, फिर secondary. Okay. Sir, but वहाँ तो already third second maximum and second secondary maximum वैसा दिया. So see यहाँ पे क्या है second secondary. तो ये थोड़ा सा like terminology का issue है. Okay. Now when you talk about this second secondary है ना, इसको हम n is equal to 2 ही मानेंगे, right? Just secondary. Okay. अभी थर्ड सेकेंडरी. कल भी क्वेश्चन में ऐसे ही हुआ था भाई, यही बोले थे. हाँ, बेसिकली यहाँ पे बस टर्म है, टर्म. ओके, राइट. यहाँ पे जो बोल दिया है थर्ड सेकेंडरी, सो यहाँ पे 3 मानेंगे n is equal to, that's it, right? This is just a terminology. Okay, right? Got it? Just a terminology used. Next 42. So ये हो जाएगा ना? Tell me, हो जाएगा ये? तो यहाँ पे मिनिमा की बात की जा रही है, मैक्सिमा की बात की जा रही है. यहाँ पे बात की जा रही है मैक्सिमा की, बट दिस इज डिफ्रैक्शन. सो वी नो इन डिफ्रैक्शन इट इज 2n + 1, राइट? है ना? ओके, सो यहाँ पे 2n + 1 lambda 1 is equal to 2m + 1 lambda 2. सो n और m का वैल्यू दिया हुआ है, lambda 1 lambda 2 निकालना है तुमको. ओके, lambda 1 भी दिया हुआ है, lambda 2 निकालना है. Now 42, I guess 42 हो जाएगा. 42 is easy, right? Formula putting getting है ना? 43 is also theory, we know that, right? Diffraction के लिए d sin theta is equal to lambda, again 43 भी हो जाएगा. Now 44, two stars are situated at a distance of 8 light years. Okay, they are to be resolved. अब देखो यहाँ पे resolving power का formula, किसको इसको याद resolving power का formula? Tell me. Limit of 1.22 lambda by d. 1.22 lambda by d, right, is equal to what? यहाँ पे ये जो d है वो स्लिट के बीच का था ना, है कि नहीं? This is equal to what? Tell me. This is what? This is alpha. This is the angle, right? है ना? This is the angle, right? हाँ है ना? हाँ sir. Right? This was angle, and this is equal to what? If you equate it with very small angle tan theta, so it will be what? Theta. It will be suppose distance is this distance is L by r. Right here. Yeah, L by r. Now this L is, this r is given. What is this r?
This R is this now, and this L we have to calculate, because when you talk about this, see, यही distance ना, resolving by यही distance ना कि minimum distance जहाँ से दो अलग-अलग object दिखे, and this is your theta. So this is your theta. Theta is equal to L by R. This R is given as 8 light years, right? है कि नहीं? Got it? And this is given as 0.25. So can you calculate now? L is equal to what? 1.22 lambda into R by D. Right? हम लोगों ने ये भी लिखा था, ये फॉर्मूला भी लिखा था. So you just have to put and solve. Okay? Got it? Just put and solve. फॉर्मूला याद होना चाहिए था. Now, again 45. 45 भी हो जाएगा same formula based. सर क्वेश्चन 51 तक सेम ही टाइप है सर. हाँ, बस सेम फॉर्मूला बेस्ड 1.22 लैम्डा बाय डी सेम ही बेस्ड है. 45 तक भी 45 भी सेम है. 47 भी सेम ही है, राइट? सेम 1.22 lambda by d. 47 also. 48 is depending on 48 थोड़ा सा लगे है ना. देखो, a telescope has an objective length of 10 centimeter in diameter. Okay, right? So this is d is equal to 10 centimeter, है ना? And it's situated at a distance of 1 kilometer from the two objects. Okay, so r is equal to 1 kilometer. The minimum distance between, right? यहाँ पे तो same ही चीज हो गया ना. हाँ सर, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में यही चीज हो रहा है. सेम ही हो गया. 49 भी सेम है. 50 बेसिस पे एक फॉर्मूला तो बस वो याद रखना है, ठीक है? That's it, right? Okay, so 51 तक सेम है, सेम फॉर्मूला. Okay, anyone तुम लोगों ने सॉल्व किया 51 तक? बिकॉज सेम फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, सेम फॉर्मूला. हाँ सर, सेम ही लग रहा है. Okay, next 52. 52 पोलराइजेशन का फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला था, हम लोगों ने पोलराइजेशन एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, बट यहाँ पे शायद वो भी नहीं लगेगा. हम लोगों ने देखा था. एक बार हम लोग 51 से चले गए, तुम 41 की बात कर रहे हो. 41 में मैंने क्या बोला था? 41 में, राइट? 41 जो प्रॉब्लम था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेम प्रॉब्लम डिस्कस किया था. देखो, सेम प्रॉब्लम ऐसे, ये देखो, और एनसीईआरटी में ऐसे काफी प्रॉब्लम्स थे, जब एक डिफ्रैक्शन पैटर्न दूसरे डिफ्रैक्शन पैटर्न या एक इंटरफेरेंस पैटर्न जब दूसरे इंटरफेरेंस पैटर्न पे कोइंसाइड करता है. एनसीईआरटी में सवाल था जब मैंने बोला था कि देखो तुमको कुछ नहीं दिया तो n और n+1 ले लो, अदरवाइज तुम रेशियो ले सकते हो. यहाँ पे क्या था? थर्ड सेकेंडरी वेवलेंथ. सो इट इज 2n + 1 into λ1 d by d. तो d by d will get cancelled, is equal to 2m + 1 λ2 d by d will get cancelled, right? तो ये इक्वेट करना सिर्फ. यहाँ पे n और m का वैल्यू दिया हुआ है, λ1 का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी λ2 का वैल्यू दिया हुआ है, तुमको λ1 निकालना है. यस और नो? That's it. That's all you have to do. Okay? Okay, sir, got it. ठीक है. So 42, an unpolarized beam of light of intensity I0 falls on सर the ये तो पता है सर, ये तो I easy है, by 2 हो जाएगा. हाँ right? ये तो पता है ना, I0/2 रहता है, एवरेज लेते हैं ना, ये तो हम लोगों ने पता ही है. 53, I guess 53 is theory, आराम से पता है, right? Tell me. Now 54 बताओ, क्लास में किया हुआ है 54? How many of you remember this? हाँ सर, वो 3 था वहाँ पे, PYQ में था problem. है ना, PYQ के साथ हम लोगों को ये किया हुआ है. So if you remember this, right? So it is similar kind of problem. हाँ है ना, जैसे तुमको मैं बताऊं, I का फॉर्मूला क्या था? I1 is equal to, tell me. So I2 is equal to I1 cos square theta. Yes or no? And here I1 was what? I0/2. याद आ रहा है सबको? याद आ रहा है सबको? हाँ सर. Right? So it is I2 is equal to I0/2 cos square theta. Now यहाँ पे देखो, एंगल जो है ना, एंगल जो लिया गया है, that is, tell me, between the angle is taken as horizontal. Yes or no? Right? Theta with the polarization axis of first polaroid. Okay, so suppose first polaroid is this. First polaroid is like this. Okay, this is the first polaroid. Okay, now two polarities are placed in path of unpolarized beam of light such that no light is transmitted from the second polaroid.
Now second polaroid से कोई light transmit कर ही नहीं रहा है. So what do you think? What is the angle between these two? Tell me. What should be the angle so that the intensity will be 0? 90. 90. So second polaroid is like this. Yes or no? Second polaroid is like this. Makes sense? The angle of second polaroid is like this. Okay. Right. Now if the third polaroid whose polarization makes angle of theta with the polarization axis of first polaroid. Okay. So third polaroid is this. Third polaroid is like this. So this is making angle theta with this. This is making angle theta with first polaroid. This one. As इसके हिसाब से. Okay. So this angle is what? 90 minus theta. Yes or no? So second polaroid और third polaroid के बीच का angle क्या हो गया? Tell me. 90 minus theta. So as I said, second polaroid और first polaroid के बीच का angle है theta. तो third polaroid और second polaroid के बीच का angle कितना हो जाएगा? 90 minus theta. Yes or no? हाँ सर. Right. Now I3 is equal to what? I3 is equal to I2. I2 value ये put कर दूं मैं. I0 by 2 है कि नहीं? Into, tell me, cos square theta into sin square theta. Right. तो 4 को मैं common 4 को मैं divide multiply कर दूं तो क्या आ जाएगा? This I3 by 4 को मैं multiply I0 by 8 into ये sin square theta 2 theta. sin theta cos theta का whole square which is हाँ. sin square 2 theta. वो तो similar problem है. Similar problem किया हम लोगों ने. हाँ सर. वहाँ पे cos के पावर में था आंसर. Yes, क्योंकि वहाँ पे एंगल वैसे दिया हुआ था. हाँ सर. Okay, so this is done, right? This is done. चलो next. 55 is again random. 55 ditch मार दो. ठीक है. 55 को वैल्यू पता होना चाहिए था. है कि नहीं? फॉर्मूला सेम है यार. फॉर्मूला में डिफरेंस नहीं है ना. फॉर्मूला जो सेम है I is equal to I0 cos square theta उसी से. बट तुमको एंगल एग्जैक्टली पता नहीं होता ना कि किस वैल्यू पे कितना एंगल है. तो 5 डिच मार दो. Now 56. Malus law पे ही बेस्ड है 55 by the way. 56. Same? Yes or no? 56 बताओ सेम है कि नहीं? इंटेंसिटी अगर निकल जाएगा, इंटेंसिटी रेशियो निकल जाएगा, तो कैन वी फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड? यस और नो? Yes sir. Right? If you can find the ratio of intensity, we can find the ratio of amplitude. Yes sir square. हाँ, खत्म. तो ये हो जाएगा. 57 बताओ. 57 is based on 57 में यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का जो ये होता है 3/5 तो वो 1/μ होगा. तो 1/μ सॉरी μ is equal to 5/3 हो जाएगा. तो ब्रिस्टर एंगल वो निकल जाएगा. yes correct right. बेसिकली हमें फॉर्मूला क्या होता है? if you remember tan theta is equal to mu, right? ब्रिस्टर एंगल के हिसाब से. yes or no? 1/μ sorry 1/μ ना. Wait सर म्यू था सर. depending on which angle you are taking, right? depending on which, इसलिए मैं हमेशा रिलेटिव लिखता हूँ. mu. Okay. Now when you talk about critical angle, we know that 1/μ is equal to what? Sin I or sin theta c. Yes or no? Yes sir. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यू की जगह में sin theta c, बिकॉज मुझे ये दिया हुआ है कि नहीं? राइट. तो tan थीटा निकल गया ना. tan थीटा निकल गया डायरेक्टली यहाँ पे. तो tan थीटा निकल गया तो थीटा निकल गया. यस और नो? दैट्स इट. और कुछ करना ही नहीं यहाँ पे. नेक्स्ट इज 58. So 58. Okay, sorry guys. Yeah, 58. Yeah. So when angle incident on a material is 60 degree, okay, the reflected light is completely polarized, okay, completely polarized, okay. The velocity of refracted ray inside the material in meter per second is. तुम मुझसे क्या पूछा? तुमको म्यू पूछ रहा है ना? हाँ या ना? Actually तुमसे म्यू पूछ रहा है. That's it. Yes or no? So
ये Yes, sir. सेम क्वेश्चन को दे दिया है, सेम क्वेश्चन दिया है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया है. Because if you know mu, can you find the velocity? Yes or no? Because mu is equal to what? C by v, right? And how can we find mu? Mu is equal to tan theta. Yes or no? Yes, sir. So can we find it? Can we find it? Theta is given as हाँ सर, हो जाएगा. v निकल जाएगा ना, है कि नहीं? चलो, okay. Now 59. A ray of light is again same, right? This is also same, है ना? We know that in this case, है ना? IP is equal to what? How many of you remember this? R plus delta, याद है? जब तुम पोलराइजेशन की बात करते हो, राइट, वी नो दिस ना, दैट यहाँ से एंगल आता है, यहाँ से डेविएट कर जाता है ऐसे, राइट, ये नॉर्मली वर्जिन रे है, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज योर डेल्टा, और ये रिफ्रैक्ट होके ऐसे आ जाता है. यस और नो? यस और नो? टेल मी, राइट? And we know that this angle is 90 degree, this angle is 90 degree, right? हाँ या ना? But this angle is refracted angle. This is your IP, because if this is also I, this is I polarized wala. So this plus this is equal to 180. So this plus is 90. So we know that I plus R is equal to 90. यही तो condition था. हाँ या ना? यही तो condition था. हाँ सर. Now next चीज यहाँ देखो, ये vertically opposite angle हो, this angle is equal to this angle. So से आ गया ना, I is equal to R plus S. Yes or no? Right? हाँ या ना? यहाँ पे तुमको क्या दिया हुआ है? तुमको डेविएशन दिया हुआ है. This delta is given. Delta is given. Right? So IP और R के बीच में एक इक्वेशन यहाँ पे आ गई, इक्वेशन यहाँ पे आ गई, दोनों को सॉल्व करके निकल जाएगा I का वैल्यू. Right? This is just linear equation to variable, और कुछ है ही नहीं है, linear equation to variable है. Okay? Right? Okay. Now 60 is a good problem because 60 uses the concept of ray optics. ठीक है? 60 uses the concept of ray optics. हाँ या ना? कितने लोगों को याद है? 59 तक समझ में आया? 59 समझ में आया सबको? Everyone, 59 Yes, sir. समझ में आया? Okay. Now, when you talk about 60, the polarizing angle of piece of glass for green light is this. Then the angle of minimum deviation for equilateral prism made of same glasses. Now, ये तुम्हारा क्या है? This is for, tell me, ray optics वाला आ गया ना? Ray optics वाला concept हो गया. Now, how many of you remember the formula of minimum deviation? Tell me, how many of you remember this? That refractor index is equal to what? Sine A plus delta m by 2 by sine A by 2, where A is the angle of prism, delta is the deviation. Yes or no? How many of you remember this? हाँ सर. है ना? तो ये सवाल एग्जाम में नहीं बनेगा, because again क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि तुम लोग यहीं पे डर के मारे छोड़ दोगे. हाँ या ना? टेल मी. अगर म्यू दिया हुआ है, पोलराइजेशन पूछना है, तुमको क्या निकलेगा? यहाँ पे तुमको वैल्यू दिया हुआ है ना, tan theta is equal to 1.44 दिया हुआ ऑलरेडी, and we know that this is nothing but mu. This is nothing but mu. Yes or no? Right? Tan theta polarizing angle given है, the polarizing angle, tan polarizing angle is equal to mu. पर वही यूज करते आ रहे हैं. So this is basically 1.44. And ये देखो, एक और चीज देखो. This is this. If you remember, this is the value of what? 1.44 is the value of root 2. root 2. है ना? ये याद रखना है. Now what is sine A by 2? A is equal to triangle 30 degree, 60 degree. What is sine 30 degree? What is sine 30 degree? 1 by 2. So it is basically sine 60 degree plus delta by 2 is equal to root 2 into sine 30, which is 1 by root 2. So sine 30 1 by 2. Wait. So 1 by 2, sorry, 1 by 2, right? So this is what? This is 1 by root 2. So probably 1 by root 2. Yes or no? And sine theta value 1 by root 2 है, तो theta is equal to what? 45 degree. है कि नहीं?
तो तुम लोग देख के छोड़ देते, बट एक्चुअली क्या है, काफी इजी है, यस और नो। सो डेल्टा निकल जाएगा, डेल्टा क्या हो जाएगा बताओ? 30 डिग्री। गॉट इट, यस और नो? यस सर। राइट, अब सबको समझ में आ गया ये? एवरीवन गॉट दिस? रेज योर हैंड। सो अगर तुम लोग देखोगे तो हमारे टीपीपी में सबसे अच्छे प्रॉब्लम्स थे, हाँ कि नहीं बताओ? हाँ सर।